Hello students, today we are going to learn Stephens-Boltzmann law and Rayleigh-Jeans law. I am Dr. Swati Raut. I hope you all are fine. In last lecture, we have discussed about the Wiens displacement law. What is Wiens displacement law? Wiens displacement law is the maximum wavelength lambda max is inversely proportional to the 1/t. ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लैम्डा मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वेवलेंथ पिक की जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है 1/t यानी टेम्परेचर को होती है. दैट्स वाई क्या होता था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता था, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर लैम्डा मैक्सिमम इज चेंजेस एंड शिफ्ट्स टू लोअर वेवलेंथ साइड. तो ये अपना विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था. फिर हमने उसको प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला से डिराइव भी किया. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन स्टीफन्स-बोल्ट्जमैन लॉ. सो व्हाट इज स्टीफन्स-बोल्ट्जमैन लॉ? ये ग्राफ आप फैमिलियर हो ये ग्राफ से. अगेन ऑन एक्स एक्सिस देर इज अ वेवलेंथ and on y-axis there is a spectral radiancy which is in Weber per meter square per picometer. Okay, again when we increase the temperature lambda maximum is shifted to the lower wavelength side. ठीक है, तो जो जोसेफ स्टेफन है ऑस्ट्रिया का है, in 1879 found the relation between temperature of black body and the power output per square meter. उसने क्या फाइंड किया है, उसके फाइंडिंग्स क्या है कि रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड पावर आउटपुट पर स्क्वायर मीटर, दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ E सिग्मा A T to the power 4, where P is for power radiated which is in watts. E stands for emissivity, emissivity को यूनिट नहीं है. then A is surface area which is in meter square. sigma is Stefan-Boltzmann constant, that's value is 5.67 into 10 to the power minus 2 Weber per meter square per k to the power minus 4, and T is of course temperature which is in Kelvin. So what is Stephens law? Stephens law is P is equal to product of E into E sigma A to the A and T to the power 4, where P is power radiated per watts, power radiated which is in watts, is emissivity which has no units, A is surface area which is in meter square, T is temperature which is in Kelvin, and sigma stands for Stephens-Boltzmann constant. ठीक है, so this is Stephens-Boltzmann law. Emissivity I is directly proportional to fourth power of temperature. Stephens-Boltzmann law क्या है? I is directly proportional to the fourth power of temperature. Okay, then next we are moving towards Stephens law from Planck's radiation formula. Planck's radiation formula को last time Wiens displacement law में हमने write किया था. Again we rewrite Planck's radiation formula, that is E lambda is equal to 8 pi hc divided by lambda to the power 5 into 1 by e to the power hc by lambda kt minus 1. ठीक है, दिस इज प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला, इसको अच्छे से याद रखना. देन टोटल एनर्जी डेंसिटी कैन बी इवेल्युएटेड बाय इंटीग्रेटिंग द अबोव इक्वेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी. हम जो ये प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला को है इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट 0 to infinity. Then what we get? E total is equal to
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity e lambda d lambda is equal to 8 pi hc divided by lambda to the power 5 into 1 by e to the power hc by lambda kt minus 1. ठीक है, then what we get? E total is equal to 8 pi hc, इंटीग्रेशन के बाहर निकाला, then इंटीग्रेशन 0 to infinity 1 by lambda to the power 5 multiply by 1 by e to the power hc by lambda kt minus 1 into d lambda. Then put x is equal to hc by lambda kt. Then what we get? Lambda is equal to lambda को इस साइड लाया, then what we get? Lambda is equal to hc by x kt. Then differentiate करो, dx is equal to hc by kt into minus 1 by lambda square into d lambda. ठीक है, then d lambda is equal to, d lambda को हमने अभी इस साइड लाया, then what we get? d lambda is equal to hc by kt into minus 1 by x square into dx. टेकिंग मॉड फॉर बेटर कैलकुलेशन, मॉड लेंगे तो क्या होगा? माइनस साइन माइनस साइन क्या होगा? चला जाएगा. देन व्हाट वी गेट? डी लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी बाय के टी इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी एक्स. नेक्स्ट, देयरफॉर इक्वेशन ए मॉडिफाइड टू, हमने मॉडिफाइड किया, देन व्हाट वी गेट? ई टोटल इज इक्वल टू 8 pi hc into kt by hc to the power 4 integration of 0 to infinity x cube into 1 by e to the power x minus 1 into dx. Use 0 to infinity x cube into 1 by e to the power x minus 1 dx is equal to pi to the power 4 by 15. देन व्हाट वी गेट? ये जो टर्म है इसके जगह पे हम क्या लेंगे? पाई टू द पावर बाय 15. देन व्हाट वी गेट? ई टोटल इज इक्वल टू 8 पाई टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 15 के टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय h क्यूब c क्यूब t टू द पावर 4. Then put a is equal to 8 pi to the power 5 divided by 15 k to the power 4 h cube c cube is equal to a put करेंगे. Then e total is equal to what we get? a multiply by t to the power 4. This is nothing but Stephen's law. ठीक है, तो स्टीफन्स लॉ में हमने थोड़े कैलकुलेशंस किए, इंटीग्रेशन किया, फिर एक वैल्यू पुट की, देन बाय रीअरेंजिंग ऑल द टर्म्स, देन व्हाट वी गेट? स्टीफन्स लॉ, दैट इज ई टोटल इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय टी टू द पावर 4. आप पेज पे लिखेंगे, डिराइव करेंगे, इजी है. अगर नहीं आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो देन यू कैन आस्क मी. Then next what we are going to focus on Rayleigh's Jeans law. For Rayleigh's Jeans law, consider the schematic. ये जो कर्व दिखाई दे रहा है आपको, ये रेलेस जीन्स लॉ को शो करता है, और ये जो पिक है, ठीक है, वो प्लैंक्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है. Then what we get? What are the considerations? At shorter wavelength, there was a major disagreement between the Rayleigh's Jeans law and the experiment. Rayleigh's Jeans law for the radiance based on classical physics. हमने देखा था classical physics और quantum physics में का डेटा हम लोगों को अलग अलग मिला था. तो then
E lambda d lambda is equal to 8 pi lambda to the power 4 kt into d lambda. This mismatch became known as the ultraviolet catastrophe. This is Rayleigh-Jeans law. Rayleigh-Jeans law का डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल कंसिडरेशंस है एंड रेलेक्स-जीन्स लॉ के खुद के जो स्पेकुलेशंस है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन और दिस मिसमैच बिकेम नोन एज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ. दिस इज रेलेक्स-जीन्स लॉ. देन again we derive Rayleigh-Jeans law from Planck's radiation formula. We know the formula. What is that? E lambda multiply by d lambda. E lambda d lambda is equal to 8 pi hc divided by lambda to the power 5 into 1 by e to the power hc by lambda kt minus 1 into d lambda. Then when lambda is very large, then hc by lambda kt is nearly equal to 1. E to the power hc by lambda kt is nearly equal to 1 plus hc by lambda kt plus 1 divided by 2 factorial multiply by hc by lambda kt square. Neglecting higher power of terms, then what we have? We get e to the power hc by lambda kt, which is nearly equal to 1 plus hc by lambda kt. Then equation A becomes, what we get? E lambda d lambda is equal to 8 pi hc divided by lambda to the power 5 multiply by 1 by hc by lambda kt into d lambda. Then E lambda d lambda is equal to 8 pi lambda to the power 4 kt into d lambda. This is nothing but Rayleigh-Jeans law. Rayleigh-Jeans law में क्या लिया हमने? एक प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला लिया, ठीक है. When lambda is very large, then hc by lambda kt is nearly equal to 1. Then what we get? E to the power hc by lambda kt is nearly equal to 1 plus hc by lambda kt plus 1 divided by 2 factorial into hc by lambda kt square, so on. Then neglecting higher powers of terms, what we get? We get e to the power hc by lambda kt, ठीक है, is nearly equal to 1 plus hc by lambda kt. Then equation A becomes e lambda d lambda is equal to 8 pi hc divided by lambda to the power 5 into 1 by hc by lambda kt, वैल्यू हमने पुट की, into d lambda. E lambda d lambda is equal to then 8 pi lambda to the power 4, cancelling the term, kt into d lambda. Then E lambda d lambda is equal to 8 pi divided by lambda to the power 4 kt into d lambda. This is nothing but this is Rayleigh-Jeans law. Thank you very much for your kind attention. Stay healthy, stay safe. Have a good day.